So this is the lecture number 1 for the chapter area related to circle for the class 10th. Now in this chapter we'll deal with the circles, its area, its circumference, the area of sector and area of segment related to these. Now, in the first exercise of this chapter deals with the area of the circle and the perimeter of the circle. Now, what is the circle? You know it a circle it is, and it is the radius. Yes, radius is center and there's a point this. So, this is the radius of the circle, and we know that area of circle is pi r square. Area of the circle is pi square r. This is the area of the circle, shaded area. Then the perimeter of the circle, perimeter or circumference of the circle is equal to 2 pi r. This is equal to 2 pi r. Now, this is the length of the boundary of the circle is known as the perimeter or the circumference of the circle. Now, semicircle we can say. Now, semicircle is half of the circle. If you divide the circle in two equal parts, then this is the semicircle, this is the radius, and area will be equal to half the area of the circle, and the perimeter of this will be half the perimeter of the circle, that is 2 pi r upon 2 plus the length of this boundary, which is equal to 2r. So this perimeter of the semicircle is pi r plus 2r. This is the perimeter of this circle. After that, we have the ring, two area bounded by the two concentric circles. Let us say the radius of this small circle be r and the radius of the outer circle be this. Then this is known as the ring. How can we obtain the area of the ring? Subtract the area of the small circle from the area of the large circle. Let the radius of the larger circle be capital R and the radius of the smaller circle be r. So pi r square minus r square is the area of the ring. So this is the formula which will be used in the first exercise of the chapter number 12, that is area related to circle. Now in exercise 12.1, question number 1, what it says that the radii of the two circles are 19 and 9 centimeter. Find the radius of the circle which has a circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. So let us say we have the two circle. The radius of the one circle is 19. The radius of the another circle is 9 centimeter. Now you have to find the radius of that circle whose circumference is the circumference of the sum of the circumference of these two circles. It is given that let the radius of the first circle be Rn, R1, radius of the second circle be R2, and the radius of the required circle be capital R. The circumference of these two, sum of the circumference of these two circles is equal to circumference of this. The circumference of this is 2 pi R1, 2 pi radius R2 is equal to 2 pi R. Now you can take 2 pi common. So R1 plus R2 is equal to 2 pi R. ये 2 pi से 2 pi cancel हो जाएगा, तो R1 plus R2 is equal to capital R, that is 9 plus 19 is equal to this 19, that is 28 centimeter is the radius of the required circle. See the calculation, so much it become easy by first of all simplify the expression and then putting the value of R1 and R2. So this is the question number 1, in which you have to find the radius of that circle whose circumference is equal to the sum of the circumference of the two given circles. So this was the question number 1. Now in question number 2, what it says that the radii of the two circles are 8 and 6. The radii of the two circles is 8 and 6. Let the radius of the first circle be R1 and the radius of the second circle be R2. Find the radius of the circle having area equal to the sum of these two. So the area of these two circle, required circle, is equal to the area of these two, means area of this circle plus area of this circle is equal to area of the required circle. Let the radius of the required circle be R. So the area of the first circle is pi r square R1 I have taken it, pi r square R2 I have taken it, and the area of the required circle is pi r square. So you can take pi common. So R1 plus
R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ना. रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 8, रेडियस सेकंड सर्कल इज 6 एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस. तो 64 प्लस दिस इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 100 equal to r square. So under root 100 is equal to r, that is 10 centimeter is the radius of the required circle whose area is equal to the sum of the areas of the two given circles whose radius is 8 and 6. So this is the very simple calculation in which you have to find the radius of the required circles whose area is equal to sum of the area of the two given circles. Now in question number 3, somewhat lengthy question it is. See it very carefully. There is a figure it is given in which is the archery target having how many concentric circle? 1, 2, 3, 4, 5 concentric circles. I am drawing it. First circle is of gold, next ring is of red, next ring is of black, next ring is of black, and the last ring is of how much? It is of white. So this is gold. Let the radius of this be r1. Next is radius be r2. Let the radius of the next circle be r3. Let the radius of the next circle be r4 and the radius of the larger circle be r5. These are the concentric circles. First one is gold, then we have red, then we have blue, then we have black, and then we have white. And it is given that the diameter of the region representing the gold is 21. जो R1 है उसका रेडियस कितना हो जाएगा 21/2, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर. जो सबसे छोटा वाला सर्कल है जो कि गोल्ड है उसका डायमीटर इज 21, सो इट्स रेडियस विल बी 10.5 एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर. मीन्स जो इसकी विड्थ दे रखी है हर एक बैंड की इट इज 10.5. सो वी कैन ईजिली फाइंड, बिकॉज ये आपका 10.5 है, ये विड्थ आपकी 10.5 है, तो रेडियस R2 विल बी 10.5 प्लस, और वी कैन से दैट इट विल बी R1 plus 10.5 and R1 is 10.5. It is also equal to 10.5. So radius of the second circle will be 10 or 10, 11, 21 centimeter. Now R3. Now how can you obtain R3? By adding width to the radius R2. That is R2 plus 10.5 and R2 is 21 plus 10.5. It will be 30.5 centimeter is the radius of the third circle. Now the radius of the fourth circle, this, which will be obtained by adding 10.5 to the radius 3, which is 30.5 plus 10.5. It will be equal to 41 centimeter is the radius of the fourth circle. Now radius of the fifth circle will be, if you add the width to the radius 4. So it will be 41 plus 10.5, that is 51.5 centimeter is the radius of the largest circles. So these are the radius of these 5 circles. Now you have to find the area of all the rings. So area of gold will be pi r1 square. Pi r1 square, because the gold circle is having the area radius 10.5. So area of gold will be equal to pi r1 square, that is 22/7 and 10.5 ka square. So this is the area of the gold. When you simplifying it, you are getting this is as 346.5 centimeter square. So this is the area of the gold. तो फर्स्ट सर्कल है जो गोल्ड कलर का, उसका एरिया आ जाएगा. सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस गोल्ड, द इनर मोस्ट सर्कल वी कैन से. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ which ring? Area of second ring is of red color. Now see it very carefully. The red color ring is this. If you subtract the area of the radius R2 from the area of the circle of R1, you will get the area of the red color. So it will be pi R2 square minus pi R1 square. सेकेंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल के एरिया का माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द रेड आ जाएगा. तो दैट इज इट इज द रिंग. ये आपके पास रिंग है. सो सिंप्लीफाइड 22/7. रेडियस आपका R2 कितना है? 21 है. 21 और R1 का स्क्वायर 10.5 है.
21 रेडियस है R2 का। तो सेकंड सर्कल में से अगर फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रेड कलर आ जाएगा। सो यू विल when you simplify it, the area of the red color will come out to be 441 minus 10.5 का स्क्वायर, तो ये आपके पास एरिया आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लाइक दिस यू कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ द नेक्स्ट ring, that is of the blue color, then area of the black color, and then after area of the white color। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ रेड। तो एरिया ऑफ आफ्टर क्या है, एरिया ऑफ रेड के बाद एरिया ब्लू है। तो एरिया ऑफ ब्लू आएगा, अगर आप ये वाला एरिया ब्लू है इस वाले सर्कल में जिसका रेडियस 3 है, सेकंड सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, जिसका रेडियस 2 है, यू विल गेट द एरिया ऑफ द ब्लू। तो R3 स्क्वायर में से थर्ड वाले सर्कल में से एरिया में से अगर आप सेकंड सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ द दिस इज ब्लू कलर। तो लाइक दिस यू कैन इजिली सिंप्लीफाई इट। तो R3 हमारे पास हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 30.5 का स्क्वायर, और R2 हमारे पास कितना था 21 का स्क्वायर है। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लू कलर। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास एरिया ऑफ द ब्लू कलर आ रहा है, द एरिया ब्लैक कलर इज कमिंग आउट टू बी 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए एंड सब्ट्रैक्ट, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस ब्लू कलर। आफ्टर दैट यू कैन इजिली फाइंड द एरिया ऑफ ब्लैक। ब्लैक कलर का जो रिंग है उसका एरिया कैसे निकलेगा, दिस इज द ब्लैक कलर and this can be obtained by subtracting from the area of the fourth circle the area of such third circle, you will get this area of the black color। so it will be pi r square fourth circle के एरिया में से थर्ड सर्कल का एरिया आप माइनस करिए, दैट इज R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। तो 22/7 R4 हमारे पास ऑलरेडी फाइंड कर लिया 41 का स्क्वायर माइनस R3 कितना था हमारे पास 30.5 का स्क्वायर। So this is the area of the black ring। So when you 41 का square 30.5 का square, the area of the black color region you will get 2.5 centimeter square। तो इस तरह से आप one by one you can easily find the area of the rings। Now the area of the white color ring will be, then you subtract from the area of the fifth circle the area of fourth, you will get the area of white। तो पाई आर स्क्वायर फिफ्थ रेडियस वाला, पाई आर स्क्वायर फोर्थ सर्कल का एरिया माइनस करेंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस वाइट कलर। तो 22/7 फिफ्थ का सर्कल का रेडियस आपका 51.5 का स्क्वायर है, और R2 R4 आपका 41 है। यू सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस वाइट रीजन विल बी 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से वन बाय वन यू कैन ईजिली फाइंड द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रिंग्स और द सर्कल। रिंग्स का एरिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सटर्नल सर्कल में से स्मॉलर सर्कल का एरिया माइनस करते हैं, यू विल गेट द एरिया ऑफ द रिंग। तो सर रेड कलर को छोड़ करके सारे जो पोर्शन थे वो थे रिंग्स। सो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। Now in question number 4, the wheel of the car of diameter 80 सेंटीमीटर, एक व्हील है सर्कुलर शेप होता है, 80 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज द व्हील मेक, कितने रेवोल्यूशन ये व्हील करेगा इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो हमें इसकी स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमें गिवन है 66, टाइम हमें गिवन है 6 कितना 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, दैट इज 10/60 किलोमीटर आवर। तो यू कैन इजिली फाइंड द डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दैट हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड बाय द व्हील। तो 66 इंटू 10/60 कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर का इसने डिस्टेंस ट्रैवल करा है व्हील ने इन 6 मिनट। नाउ बिकॉज दिस इज मीटर and you multiply by 100, you will get in centimeter, while converting to centimeter, because the radius of this circle is given in this wheel is given as 80 centimeter, in centimeter it is given, so the distance traveled by the wheel in 10 minutes is this 111,000,000 centimeter. Now the circumference of the wheel, because in one revolution the
distance traveled the wheel is equal to its circumference, that is 2 pi r, that is 2 into 22 upon 7 upon this is 80. This is the circumference of the wheel. So that number of revolutions will be made by the wheel, revolution will be equal to distance traveled divided by the circumference of the wheel. This formula you should learn it. अगर आपको distance travel निकालना होता तो number of revolution is equal to circumference, को the distance traveled by the wheel in one revolution will be equal to its circumference. तो कितना distance था हमारे पास 1100000 and the circumference of the wheel is 2 into 22 upon 7 into 80. Simplified, you will get the number of revolutions is equal to 4375. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल को सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील से डिवाइड करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाते हैं एंड यू शुड हैव द यूनिट्स शुड बी सेम. किलोमीटर पर आवर था, हम टाइम आपका मिनट में था, आवर में कन्वर्ट करा. डिस्टेंस ट्रेवल आपका किलोमीटर में आया, आई कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर एंड then why I have converted to centimeter, because the radius of the wheel is given in centimeter, so I have converted into centimeter. So the number of revolution is equal to distance traveled is upon the circumference of the wheel. So this is the question number 4. In 5, take the correct answer of the following if the diameter and the radius of circle are numerically equal. Circumference जो है area के equal है न्यूमेरिकली मीन जैसे 100 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस है तो 100 सेंटीमीटर आपका एरिया है. तो 2 पाई आर किसके इक्वल, पाई आर स्क्वायर के इक्वल, पाई से पाई कैंसिल एंड आर विल बी इक्वल टू 2. तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2 यूनिट. तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 2 units because dimension is not given is equal to, we'll write 2 units. So this is the first exercise of the chapter number 12 of your NCERT book. Continue next lecture. Thank you.